डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम्स चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से Raj, I got your doubt. This is your answer. समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu, learn live online to attend a Hey, so I welcome each one of you. Good afternoon to every one of you. So we are here to discuss yesterday's paper 1 or you may say shift 1 maths paper. तो मैं सभी का वेलकम करता हूँ. हाय सौरभ, आस्था, राजदीप and others, everyone. I welcome each one of you. So at the outset, let me introduce myself. I am Shubham Jhawar. I have graduated from IIT Madras with degrees BTech Honors and MTech. I have been teaching for over 4 years now, and I have taught, guided, mentored over 5,000 students, many of whom have landed up in the prestigious institutes of IITs and many other institutes like NITs, BITS, etc. So sabhi ka welcome. Maybe we can begin straight away. All right. तो जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेक्यूलेशन बेस्ड हैं. Yeah, I mean we gathered this information from our students, and based on that input we have just put the questions in front of you and I'll be solving them for you. ठीक है. मेनली ये हिंदी में रहेगा. मेरे ख्याल से हिंदी सबको आती है, बीच में हो सकता है थोड़ी इंग्लिश निकल आए. Yeah, because generally we teach majorly in English in our paid courses. Yeah. So some of you might have seen me before, possibly. Yeah. Generally I take a lot of paid courses. Here I am in front of you to serve you by solving questions of yesterday's paper 1 maths subject. Yeah. So the shift 1 maths questions we are going to look here. Yeah. All right, so here, of course, it may seem a bit late, but then since we did paper 2 first based on, the shift 2 maths paper first based on interest, here I hope you will also relish the solutions that I am going to present for the paper 1 maths. Yeah? All right. हाँ सर, हिंदी आती है. कृष्ण, thanks for that comment. Yeah. तो आप मेरे को फीडबैक देते रहना. अगर लगे कि स्लो है, अपन खट 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 सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बिकॉज मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर इजी. या यू कैन सॉल्व देम वेरी क्विकली, एंड देयर आर गोइंग टू कम क्वेश्चंस व्हिच आर क्वाइट इजी एंड वी विल सॉल्व देम जस्ट लाइक दिस. ऑलराइट. तो इधर पहले क्वेश्चन पे आते हैं. एंड व्हाट आई वांट यू इज टू योर अटेंशन. प्लीज लिसन केयरफुली सो दैट यू अंडरस्टैंड इट इन फर्स्ट गो. ठीक है, पहली बार में समझ में आ जाए आप सबको. ठीक है. क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मेरे को दे रखा है f0 मेरा 0 के बराबर है, f1 पूछा है. तो पहले तो आप देखोगे लगेगा या पता नहीं है एक्सपोनेंशियल क्या दे रखा है. कोई दिक्कत नहीं है. जस्ट इफ यू सी केयरफुली, जस्ट अ मिनट. या सो इफ यू सी केयरफुली, ये जो है e टू द पावर y dy by dx माइनस e टू द पावर y इक्वल टू e टू द पावर x दिया हुआ है. अभी ये क्लिक करना चाहिए कि यार e टू द पावर y को मैं t ले लूं तो मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा. सो व्हाट यू टेक इज यू टेक e टू द पावर y एज t. ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन. e टू द पावर y t ले लिया तो e टू द पावर y dy by dx इज बेसिकली dt by dx. तो e टू द पावर y dy by dx क्या है? बेसिकली dt by dx. e टू द पावर y को मैंने t लिया ही है, इक्वल टू e टू द पावर x. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है. इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो. इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ जाएगा? सो इंटीग्रेशन फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रल -1 dx. तो बेसिकली ये e टू द पावर -x इज इंटीग्रेशन फैक्टर. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? t मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर -x dx.
ठीक है. So basically it becomes t is what? T is basically e to the power y. और हमें क्या निकालना है? f1 निकालना है. And y is basically fx. So e to the power y multiply by e to the power minus x is equal to, ये तो मेरा 1 हो गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया? x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c. एक इंफॉर्मेशन दी हुई हमें ये आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने के लिए. एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. इसको हटा सकते हैं क्या? जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या सो you put for x equal to 0 y is 0. तो x 0 पुट करो और y 0 है, तो बेसिकली you get c to be 1. c मेरा 1 आ जाएगा. x को if you put 0, y is also 0. 0, so 1 equal to 0 plus c. c मेरा 1 आ गया. And what we have been asked is fx की वैल्यू x equal to 1 पे क्या होगी? fx की वैल्यू x equal to 1 पे क्या होगी? Just put x equal to 1 and you'll get value of y. ठीक है. तो बेसिकली e to the power y, e to the power minus 1 equal to 1 पुट करा तो 2 आ गया. So basically e to the power y is equal to 2e. ये e to the power minus 1 by e है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, e आ गया, तो e to the power y is 2e. So y क्या हो गया? ln 2e. So basically it becomes what? 1 plus ln 2. 1 plus ln 2 आंसर है. You may take a snip of it, you may take a pic of it, you may take a screenshot of it, whatever, just quickly note this down. Basically you may take a snip or pic of it. Quick. कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यार. देखो मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं तब मेरा फोकस सॉल्व करने पर रहेगा, उसके बाद आप सिस्टमैटिकली डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई है तो फिर हम देख सकते हैं. So shift to complete solution is not available. I am not sure about that. Here we are talking about shift 1 questions. Yeah, Satyam, I welcome you. ये मेरा right हुआ, आर्यन is saying. Yeah, good to know that. I'm happy that you got it right. I hope many of you must have got it right. Hey, let's move ahead. Let's move ahead. आगे बढ़ते भाई साहब. Here we go. Okay यार, बार ये. So इसको. All right. So here we go. A be a root of this equation x square plus x plus 1 equal to 0. Question this equation देख के समझ में आना चाहिए. ओमेगा स्क्वायर इसके रूट्स है, खत्म. ठीक है, ये चीज खट से दिमाग में आनी चाहिए. And there is a matrix A given to us as 1 by root 3. Matrix 1 1 1 is the column 1, 1 alpha alpha square, 1 alpha square alpha. These are the respective columns. And what we have been asked is a to the power 31 क्या होगा? In terms of a square, I mean in terms of a we have to answer whether it is a square, a cube या a to the power 4. तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं भाई? पहले पता तो करो a स्क्वायर क्या है. पॉसिबली a क्यूब, a to the power 4, and you try to check the pattern. अरे पैटर्न क्या बन रहा है, उससे आंसर आ जाएगा खट से. So just check it out. Basically से आप जो अल्फा जो रूट है बेसिकली a नहीं होगा, ये अल्फा होगा. So some typing error. Nonetheless, let's move ahead. तो basically a मेरा क्या हो गया? a हो गया मेरा 1 by root 3 1 1 1. सपोज अल्फा को मैं ओमेगा ले रहा हूं, 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. अभी a स्क्वायर अगर मेरे को निकालना है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओमेगा स्क्वायर भाई साहब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा. अभी मल्टीप्लाई करो टर्म बाय टर्म. आई मीन यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. रो बाय कॉलम होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 by 3 1 1 1 3 आ रहा है इधर भाई साहब. या एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. अगेन 1 प्लस ओमेगा इज 0. तो सिमिलरली यू विल गेट 0 0 3 एंड 0 3 0. खट से चेक करो यार, आ रहा है. सो बेसिकली a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर. तो a स्क्वायर इज टर्निंग आउट टू बी 1 0 0 0 0 1 0 1 0. ठीक है, ये मेरा a स्क्वायर आ गया. अगर a स्क्वायर का स्क्वायर करूं मैं a टू द पावर 4,
करके देखो, पेन पेपर लेके बैठा करो, खुद से भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाओ। ए स्क्वायर का स्क्वायर अगर मैंने कर दिया, ठीक है, तो यू विल फाइंड कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है भाई साहब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 8 टू द पावर 4 मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 8 टू द पावर 8 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 8 टू द पावर 12 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 8 टू द पावर 16 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, सो एंड सो फोर्थ। 8 टू द पावर 4 का मल्टीपल जो भी होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 8 टू द पावर 28 भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, तो 8 टू द पावर 31 अपन से पूछा गया भाई साहब, ए क्यूब होगा भाई साहब, खत्म हो गई बात, सी आंसर है। टेक अ नोट ऑफ इट, कोई डाउट हो तो पूछो। खत्म हो गया मेरे ख्याल से, नोट किया होगा सबने। या ए क्यूब, यस हर्ष यू आर राइट। नोट नहीं, आप स्नैप ले लो, इसलिए मैं हट रहा हूं। आप स्नैप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पिक ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो आप, या इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो। ए स्क्वायर निकालना है, ए टू द पावर 4 आई आ जाता है, खत्म हो गया, उसके बाद लिखने की भी जरूरत नहीं है, खत्म है, ओरल है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, लेट्स मूव अहेड। शुभम सोनी, आई एम हैप्पी दैट आपका हो गया था, वेरी गुड। या so I'm having my exam tomorrow, so Harsh, I welcome you. This may be a very good preparation for you. I mean, what better than seeing the solutions of recent, I mean very recent, you know, JEE Main paper. All right, so here we go. Oh guys up, so meanwhile read the question. All right. 6 digit numbers that can be formed using digits 1, 3, 5, 7, 9, और जो digits होते हैं अपने पास, such that each digit is used at least once. At least one each of these digits should be used. तो कहने का मतलब क्या है, 6 digit number चाहिए मेरे को, या so for 6 digit number where all these 5 digits should be coming at least once, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनमें से कोई एक डिजिट रिपीट होगा एक बार, ठीक है। तो वो कितने तरीके से हो सकता है, इन 5 में से कोई भी एक डिजिट रिपीट होगा, तो उसके बाद मेरे पास सपोज ये डिजिट रिपीट हो रहा है, सपोज से 1 रिपीट्स, तो 1 रिपीट कर रहा है मतलब क्या, 1 1 एक मिनट, जस्ट अ मिनट, या 1 1 3 5 7 9, इनको अरेंज करना है। 6 थिंग्स टू बी अरेंज्ड, जिसमें से 2 रिपीट कर रहे हैं, क्या होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, बेसिकली क्या हो गया, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल, दिमाग में आता है 720 याद होनी चाहिए वैल्यू भाई साहब, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 360, क्या हो गया ये 1800, खत्म हो गया, नोट कर लो। कोई डाउट हो तो पूछो यार। या हर्ष यू आर राइट, 1800। सृजन रॉय इज सेइंग, हे सृजन यू आर आल्सो राइट, निरुपम यू आर राइट, या हे डोंट अब्यूज एनीवन भाई, इंडियन आर्मी मोटिवेशनल स्टेटस, आप अपशब्द यूज ना करें। ऑल राइट, सो आई होप यू गॉट इट, टेकन ए स्नैप। कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो यार, ठीक है। ऑल राइट, सो आई एम मूविंग अहेड एंड आई एम रिमूविंग दिस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मी टू रिमूव दिस, दैट इज द प्रॉब्लम। एक मिनट, हैव वी स्किप्ड समथिंग, नो। ऑल राइट, हियर वी गो, और हियर वी गो, रेड यूज करते हैं ना अपन। ऑल राइट, द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय सर्कल which is not common to the region bounded by this parabola and this straight line. All right, इधर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रॉ कैसे करोगे, बेसिकली सर्कल है, उसका सेंटर क्या है भाई साहब, 0,0, ऑरिजिन, my bad, so origin is the center of the circle and radius is √2, y square equal to x और y equal to x, so y equal to x तो मेरा ये हो जाएगा, या and y square, so this point is basically √2, sorry 1,1, all right, so this is 1,1, so here y square equal to x will be what, parabola like this, ठीक है। Basically the point of intersection is this 1,1 point, ठीक है। Now basically what we want is
we want area enclosed they could have specified possibly better, क्योंकि ये पैराबोला ऐसा जाएगा, या सो common region bounded by the line and parabola. All right, so area of region enclosed. Here it could have it can possibly be this or this. Let's take this as the area. Just give me a moment. Suppose ये area है मेरा जो enclose हो रहा है, जिसे हटाना है, ठीक है. All right, so if I remove this area, then what will I get the answer? Yeah, a bit of ambiguity here apparently, के area between parabola and straight line. Yeah, क्योंकि ये जो parabola है y square equal to x, it will be something like this. Here they have not mentioned anything else. So okay, let's say we have to remove the value of the area bounded here in this part. Yeah. So basically this is y equal to root x, this part, just this part, y equal to root x, नीचे वाला y equal to minus root x हो जाएगा, ठीक है, and this is y equal to x, this is y equal to x. So basically pi r square is the total area enclosed in the circle minus area between this line and this parabola. Yeah, it could have been more clear, लेकिन थोड़ा सा ambiguity है कि कौन सा area, but then let's consider this area. Yeah, all right, so here ये क्या हो जाएगा? Basically it is integral 0 to 1. ये point है 0, 0. This point is 0, 0, and this is point is 1, 1. ठीक है? So integral 0 to 1. What is the curve above? Y equal to root x. What is the curve below? Y equal to x dx. ठीक है, so this is the answer. हो जाएगा, खत्म है ये क्वेश्चन. 2 पाई बस इंटीग्रेट करना है, माइनस इंटीग्रल 0 to 1. ओके, इंटीग्रल 0 to 1 ये x to the power हाफ, 3/2 3/2 2/3 हो जाएगा भाई साहब, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 1, 0 पे दोनों 0 है, सो 2 पाई माइनस you have basically 2/3 minus half. So just check it out. 1/6 जा रहा है, so 2 pi minus 1/6. So 2 pi minus 1/6 क्या हो गया? B आंसर है, खत्म हो गया. Yeah. So that's how it is. That's how it is. ठीक है. Now a bit of ambiguity. So what assumption we have taken is the area being talked about is this. या वाई नॉट दिस, क्योंकि ये जो है ना इधर सर्कल भी आ रहा है. वी वॉन्ट ओनली दैट एरिया विच इज बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड दिस लाइन. या सो आर अजम्पशन हैज सम वैलिडिटी हियर. ठीक है, बिकॉज यू में से कि सर ये एरिया भी इन दोनों के बीच में है, लेकिन बट हियर सर्कल आ रहा है, सर्कल नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ. आई होप दिस मेक सेंस. फटाफट नोट कर सकते हैं आप, एंड देन वी मूव अहेड. So why did we take 2 pi? Hey Manoj, 2 pi basically area हो गया ना. What we want is area of circle except this area which is bounded by parabola and this is straight line. ठीक है, तो area of circle क्या होता है? Area of circle होता है pi r square. या area of circle होता है pi r square. अरे यार. So that's why 2 pi minus ये bounded area. ठीक है, क्लियर है? या मनोज, आई होप इट इज क्लियर. या मनोज रिप्लाई कर दो यार. चलो ठीक है, मेरे ख्याल से नोट किया होगा. लेट्स मूव अहेड. हे गुड, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग दैट मनोज यार, थैंक्स. या सो ओके, लेट्स मूव अहेड. नोट किया होगा, इसने लिया होगा. लेट्स मूव अहेड. ओ भाई साहब, ये सब इधर इधर उधर क्यों होता है? ऑल राइट, सो सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स
in this expansion. ठीक है, 61 है तो n निकालना है. First of all, let's say this is expression E. So let's say E equal to a0 plus a1 x plus a2 x square plus so and so forth. Highest power क्या हो जाएगा? 4n plus a4n x to the power 4n. ठीक है. Now if you put x to be 1, yeah, you get basically what? When you put x to be 1, you get a0 plus a1 plus a2 plus so and so forth plus a4n. Yeah. Now when you put x to be 1 here, basically you will get what? Left hand side will give you 1. 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. So they will keep cancelling each other and you will be left with 1 as given by x to the power 2n. Yeah. So 1 multiplied by 2n plus 1. So basically you get this to be 2n plus 1. Yeah. Now what we want is coefficient of even powers of x. Yeah. So what we do is x को -1 put करो यार, खत्म हो गया. -1 when you put, first of all what you get in what value you get of this expression, just put -1 here. So 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 so and so forth 2n plus 1 times. And here it becomes, when you put x to be -1, 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1. या पता चला ये मीम बन गई, मतलब +1 -1 +1 -1. All right. So when you add all of them, basically you will be left with 1 because the terms get cancelling each other. 1 minus 1, 1 minus 1. Yeah. But last you will get 1 and that's what remains. So 1 multiplied by 2n plus 1, ये basically 2n plus 1 हो गया. And here you get a0 minus a1 plus a2 minus a3 plus so and so forth plus a4n. Yeah. And when you add the two, so basically 2 times 2n plus 1 is equal to 2 times the sum of coefficients of even powers of x. 2 times a0 plus a2 plus a4 plus so and so forth a4n. ठीक है. So sum of, I'm writing in short, even coefficients. ठीक है भाई साहब. So basically sum of even coefficient मेरे को 2n plus 1 मिला है, लेकिन 2n plus 1 is given to me as what? 61. So n क्या हो गया? n 30 हो गया भाई साहब. Yeah. So A is the answer. Please check it out. कोई डाउट हो तो पूछो. Yeah, pro game fixers, you're right. Actually you just need basic knowledge and basic understanding of ability to create the required coefficients or sum of coefficients. ठीक है. या मेरे ख्याल से नोट क्या होगा? हे देवांश, डोंट वरी, बर्बाद हो गया मैं, ऐसे ऐसे बेकार मत सोचो यार, अभी एक और अटेम्प्ट बाकी है. ठीक है. और एक गुड न्यूज रहेगी आप सबके लिए जिनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया इस बार. देयर इज वन मोर अटेम्प्ट. या ट्राई योर बेस्ट. डोंट थिंक व्हाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ऐसा, अरे क्यों खराब गया. हे डोंट थिंक दैट वे. व्हाट यू शुड थिंक इज हाउ नाउ. अब क्या करना है. नेक्स्ट अटेम्प्ट है, अपन को पूरे जोर से मेहनत करनी भाई साहब, पूरा मतलब वी शुड बी कमिटेड, वी शुड बी डेडिकेटेड, वी शुड बी फोकस्ड. ठीक है. तो एक न्यूज रहेगी टुवर्ड्स द एंड, व्हेन आई एंड द डिस्कशन देयर इज सम अनाउंसमेंट व्हिच may make you happy. Yeah. Hey, please everyone, please pay attention here, and I hope you have noted this. Yeah. Keep taking snips or screenshots, whether mobile or laptop or whatever you may be using, pad. Just keep taking snapshots. So here we go. Okay. All right. So statistics. Variance of first n natural numbers 10 है. Variance of first m even natural numbers 16 है. ठीक है. So m plus n पूछा है. So first of all, what is variance of first n natural number? So basically variance is equal to, you must have heard, expectation of x square minus expectation of x whole square. अगर ये नहीं सुना है तो basically the point is you will have summation of square of the first n natural numbers r equal to 1 to n. r equal to नहीं लिख रहा है, understood है. r is the dummy variable here. ठीक है. divide by कितने natural numbers है? n minus summation r equal to 1 to n
divided by n whole square. Yeah, so expectation of x square minus expectation of x, which is basically mean, yeah, arithmetic mean का square. ठीक है, so this is what variance is of first and natural numbers. Yeah, so what essentially do you get? You get this to be n plus 1 2n plus by 6 divided by n minus n plus 1 by 2n whole square. Yeah, sum of first and natural numbers, you know, n plus 1 by 2. Sum of squares of first and natural numbers, n plus 1 2n plus 1 by 6. खत्म हो गया ये. ठीक है. So basically what you get b n plus 1 2n plus 1 by 6 minus n plus 1 whole square by 4. Yeah, and this has been given to me as क्या दिया गया मेरे को ये 10 दिया गया भाई साहब, 10 का दम. So now you just resolve, फटाफट रिजॉल्व करते हैं. n plus 1 अगर आप कॉमन लेते हो और अगर LCM भी लेते हो, सपोज 12 LCM ले लिया, तो इधर क्या आ गया 2 times 2n plus 1 minus 3 times n plus 1 equal to basically 10. ठीक है. So what does it turn out to be? See, basically when you are solving in competitive exam, you need not be writing beautifully and all. खट 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 लिखना है, आंसर इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर तक पहुंचना है. ठीक है. ऑफ कोर्स कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है. सो लेट्स सी, आई होप वी वुड नॉट डू कैलकुलेशन मिस्टेक. तो ये क्या हो गया 4n minus 3n n हो गया प्लस 2 minus 3 minus 1 हो गया. ठीक है. तो व्हाट यू गेट इज यू बेसिकली गेट I hope the calculation is right. Yeah, you basically get n square minus 1 equal to 120. So basically n is basically number of terms, so it has to be non-negative, is it not? So n square is 121, so n मेरा 11 हो गया, n has become 11. Now similarly, do we have extra slide? Nonetheless, hey, let me just here. So variance of first term even natural number. ठीक है. So what we want is we want variance of 2, 4, 6 till 2m. Now variance of 2, 4, 6, 8 so and so forth up till 2m, the first m even natural number, is basically equal to 4 times variance of 2, 4, 6 so and so forth up till 2m is basically equal to 4 times variance of 1, 2, 3 so and so forth up till m. Yeah, and what is that? That is this is equal to 16. This is equal to 16. Now based on whatever we have done, variance of first n natural numbers is n square minus 1 by 12. So variance of first m natural number क्या हो जाएगा भाई साहब? m square minus 1 by 12. I hope you are able to see. Yeah, just I made it. Yeah, so we made it. Yeah, so this is equal to what? This is equal to 16. This is equal to 16. So when you cross multiply, m square equal to 49 is what you get. Just do orally. Oral calculation karo, khatam ho gaya. So basically you get m to be 7. And what we have been asked is, we have been asked m plus 7. So m plus 7 क्या हो गया? m plus n. So m plus n क्या हो गया? m plus n is basically 7 plus 11, 18 answer है. 18 is the answer. Just note it down. So many of you have already got it right. That's good. ठीक है. Crash course कैसे लूँ? Hey Devansh, exactly that's what we'll talk about at the end of the discussion. Yeah, because there is no point in discussing at this point of time. Last में discuss करेंगे इसे. ठीक है. All right. So I mean इधर अभी सबका फोकस डिस्कशन पे. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस. सर न्यूमेरिकल बेस्ड है क्या ये क्वेश्चन? हाँ, इट सीम्स टू बी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नो ऑप्शन. या ऑलराइट. हे, आई होप यू हैव टेकन स्निप ऑफ इट. प्लीज बी क्विक इन डूइंग दैट. या चलो 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 लेट्स मूव अहेड. ये पूछा है लिमिट, खट से हो जाएगा. बेसिकली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 3 to the power x plus 3 to the power x minus 1 minus 12 divided by 3 to the power minus x by 2 minus 3 to the power 1 minus x. Yeah. Now you can use L'Hopital.
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ आर टेंडिंग टू 0, यूज लॉपिटल. खत्म हो गया, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया. व्हेन यू यूज लॉपिटल्स, what you get, limit x tending to 2, you differentiate numerator and denominator separately. ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब, 3 to the power x plus 3 to the power x minus 1 ln3 minus 12 का डेरिवेटिव 0 है, 3 to the power minus x by 2, yeah, minus will also come and by 2 will also come, and 3 to the power 1 minus x. So 3 to the power 1 minus x का derivative will basically be 3 to the power 1 minus x ln3, but 1 minus x is there. Using chain rule, 1 minus will come and it will become plus. ठीक है, खत्म है. ln3 cancel हो गया and just put x equal to 2. You basically get what? 9 plus 3 divided by 1 by 6 minus 1 by 6 plus 1 by 3. So ये 1 by 6 हो गया. So basically 12 multiplied by 6, 72 answer है भाई साहब. Just take a note of it. So very simple, straightforward question. Take a good quick note of it, or maybe best is take a snip of it. आगे बढ़ते हैं. Yeah? चलो let's move ahead. I hope you have taken note of it or taken a snip of it. All right, इधर देखना, इसे ओरल करेंगे अपन. Everyone please pay attention here. We are going to do this question orally. ठीक है. fx is continuous differentiable, x minus 7 close to 0 closed, derivative always less than equal to 2. Yeah. And f of minus 7 is minus 3. So range of values that f of minus 1 plus f of 0 can take. ठीक है. So first of all, since derivative is less than equal to 2, derivative can even tend to minus infinity. So it can be like zup, you know, it's, you may say खाई में गिर गए, वैसा function हो सकता है. Yeah, so that means the values f of minus 1, f of 0 both may tend to minus infinity, possibly. Yeah, so there's some minimum can be minus infinity. ठीक है. So of course, so in that sense you can just reject these two. ठीक है. Now what can be the maximum? Listen carefully. What can be the maximum? f of minus 7 is minus 3. Maximum तब आएगा जब you have maximum slope. Maximum तब आएगा जब you have maximum slope. The lesser the slope, the less is the increment per unit of x. So the maximum slope will give you the maximum values at x equal to 0 and x equal to minus 1. Yeah. So for maximum, the derivative should be the maximum throughout. F prime x should be 2. Yeah, maximum. Yeah. If derivative is 2 throughout, basically it turns out to be a straight line. It turns out to be a straight line passing through point passing through the point minus 7 comma minus 3 and slope 2. ठीक है. So you need not go even for the straight line. Basically, listen carefully. Slope equal to 2 means what? With a unit increment in x, you have 2 units increment in y. With a unit increment in x, you have 2 units increment in y. Minus 7 से minus 1 पे 6 units increment in x. So that means there will be 12 units increment in y. Yeah. So with this, what you will have, f of minus 1 equal to minus 3 plus 12 units increment in y. So basically it turns out to be 9. Similarly, from minus 7 to 0, 7 units increment in x. So there will be 14 units increment in y. 11. So my answer is basically what? The maximum is 11 plus 9. It's basically 20. So that means what? Minus infinity open से 20 closed. खत्म हो गया. अब ये समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी क्वेश्चन इजी है. अगर आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो, खट से हो जाता है, ओरली हो जाता है. या प्लीज टेक अ स्निप ऑफ इट. ये ऐसा लॉजिक कभी शायद नहीं देखा हो आपने, हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन खट से. ठीक है. दैट्स हाउ इट इज.
मिनिमम मेरा माइनस इन्फिनिटी जाएगा और मैक्सिमम के लिए मेरा स्लोप थ्रू आउट 2 होना चाहिए, खत्म हो गया, ठीक है। या हे देवांश, डोंट वरी मच। या डाउट है क्या सर? माइनस इन्फिनिटी प्लीज एक्सप्लेन। अरे देखो, अगर स्लोप इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो मेरा f -1 और f0 क्या होगा? दोनों ही माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर जाएंगे। स्लोप माइनस इन्फिनिटी मीन्स इट इज, यू अंडरस्टैंड राइट? तो खत्म हो गया यार। तो मिनिमम क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम कब होगा? जब मैक्सिमम स्लोप हो जाए आपका थ्रू आउट 2, ठीक है, थ्रू आउट। Got it right? Hey, I am so happy for you यार, pro game fixtures, you got it, very good, yeah. So that's how it is, we can do it orally, खत्म हो गया ये, ठीक है। Exam tomorrow, what should I do now? One thing that you should not do is, you should not take tension unnecessary. Nageshwar, just make sure you do your best, yeah. Also make sure you relax. Otherwise you will be like half sleepy in the exam. So don't let that happen. Relax. If you have short notes, just revise short notes. If you want to see something, just see something, just like you are seeing this, yeah, but relax. Because in one day you can't, make something upside down. No, it's not gonna happen, yeah. So just please pay attention here. Okay? Explain why multiply by 2. Hey, Sanjay, hey, because अगर स्लोप 2 है, स्लोप 2 मतलब क्या? इफ यू हैव 1 यूनिट इंक्रीमेंट इन x, यू हैव 2 यूनिट्स इंक्रीमेंट इन y. तो -7 से -1 6 यूनिट इंक्रीमेंट इन x है, तो y में कितना इंक्रीमेंट होगा? 12. समझ में आया संजय? सो या नागेश्वर एंड प्रो गेम फिक्स टू x. वेरी गुड. hey, I am so happy संजय for you. Yeah, you got it. So hey, let's move ahead. I hope you have taken note of it. ओरल होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Here we go. अरे भाई आगे बढ़। हाँ, all right. So y equal to mx plus 4 is common tangent to parabolas this and this. Then value of b is, थोड़ा सा लेंथी है, yeah. So I'll just give you the essential concept here. Basically, if y equal to mx plus 4 is tangent to this y square equal to 4x. So m स्लोप का टेंजेंट क्या हो जाएगा? y equal to mx plus a by m. a क्या इधर 1 है, 1 by m. Now if you compare, 1 by m is 4. This is supposed to be 4. So that means m is equal to 1 by 4. m is equal to 1 by 4. So basically y equal to 1 by 4x plus 4. This is the equation of tangent. Yeah. So this is the standard equation you must already be aware of. Tangent to y square equal to 4x, y equal to mx plus a by m. खत्म हो गया. You get m equal to 1 by 4 by comparing the constant term. So this is the tangent line which is also tangent to x square equal to 2by. ठीक है? So now you may do it in different ways. One way is, what you can do is x square equal to 2b. You can solve the two equations together. Yeah, since this line is supposed to be tangent to this parabola, that means when you solve both of them together and you create a quadratic in x, the discriminant is supposed to be 0. Discriminant 0 हो जाएगा. क्यों? Repeated root यार, दो रूट्स नहीं मिलेंगे, एक ही रूट मिलेगा और एक रूट मिलेगा. Yeah, so exactly one real root of a quadratic, discriminant is 0. Yeah, so you get 2b multiply by 1 by 4 x plus 4. Yeah, 1 by 4 x plus 4 put कर दिया. Put d equal to 0 and when you put d equal to 0 you will get value of b. चलो सॉल्व ही कर देते हैं यार, सॉल्व कर देते हैं. ठीक है, d इक्वल टू 0 आ गया. तो ये बेसिकली इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई 2x माइनस 8b इक्वल टू 0. सो d इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 4ab, so minus 32b. तो b 0 तो नहीं होगा, b will not be 0. Why b should not be 0? अगर b 0 हो गया तो x square equal to 0. It is no more parabola. ठीक है, they are saying parabola. It is no more parabola. X square equal to 0
is basically x equal to 0. X equal to 0 is basically y axis. वो लाइन हो गया, पैराबोला नहीं हो गया, पैराबोला की बात चल रही भाई साहब. So b can't be 0. So that means b has to be you can say minus 128. खत्म हो गया, सॉल्व कर लिया यार. एक स्टेप और था, मैंने कहा चलो कर देते हैं. ठीक है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. सर इफ वी कैन नॉट प्रिपरेशन फॉर JEE, so what should I do? Hey Harshal, I'm not sure what you're asking. If you are targeting JEE, you should be preparing for it. And in case you feel your preparation is not sufficient, don't worry, just go and give the exam. There is one more attempt. Yeah, so don't take unnecessary tension here. ठीक है, all right, I hope you have taken note of it. Let's move ahead. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार. ओ भाई साहब, हाँ, सिंपल क्वेश्चन है. अल्फा बीटा रूट्स है इस इक्वेशन के. x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा रूट्स है. तो अगर इसे मैं 10x में क्वाड्रेटिक की नजर से देखता हूं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इन 10x, तो इसके रूट्स क्या हो गए? ओके, इसके रूट्स बीटा, सम ऑफ रूट्स, वी नो व्हाट विल इट बी. इट विल बेसिकली बी रूट 2 लैम्डा बाय k प्लस 1. ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 10 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 10 बीटा, ये क्या होगा? कांस्टेंट टर्म. बेसिकली कांस्टेंट टर्म यू शुड टेक ऑन द सेम साइड, तो k माइनस 1 हो जाएगा. सो k माइनस 1 डिवाइड बाय k प्लस 1. सो 10 अल्फा 10 बीटा पता है अपन को? अरे यार थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, k प्लस 1. सो 10 अल्फा 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा पता है, और अपन को दिया हुआ है 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा. सो बेसिकली 10 alpha plus beta is basically what? Or 10 square alpha plus beta is basically 10 alpha plus 10 beta divided by 1 minus 10 alpha 10 beta whole square. So this is given to us as 50. So solve कर लो. 10 alpha plus 10 beta को इधर पुट करो, 10 alpha 10 beta को इधर पुट करो. Now you may wonder कि भाई लैम्डा पूछा है लेकिन इधर तो k और लैम्डा दोनों आ रहा है. हाउ? सो यूल फाइंड कि k कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट हियर. यूल सी कि k कैसे तो भी कैंसिल हो जा रहा होगा, एंड बेसिकली यूल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा. अगर लैम्डा पूछा तो लैम्डा आ जाएगा इससे. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, मे बी आई कैन शेयर विद यू द आंसर. ये इट शुड बी दिस 10 आ रहा होगा. यू कैन चेक इट आउट. Lambda will turn out to be 10. I don't think I need to do it completely. You have to put and solve. खत्म हो गया. ठीक है, खत्म हो गया. Take a note and then we move ahead. So conics को strong करने की कोई advice? See, Asmit, in conics, you should be thorough with, the formulae of tangent, formulae of normal. As you have seen in the previous question, we used formula of tangent to a conic, to a parabola. So that is important. Apart from that, you should be aware of relationship between, say distance between vertex and center, distance between, vertex and focus and all those things. These are important formulae. All right. Hey, let's move ahead. So I hope you have taken note of it. Let's move ahead. Okay. Image of this point in plane containing these 3 points. ओरल है यार, थोड़ा सा लेंदी है बस, लेकिन ओरल है. अगर सपोज आप ये क्या हो कि दीज आर दी 3 पॉइंट्स, या दीज आर दी 3 पॉइंट्स A B C, या सो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा? AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर. मेरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाएगा. And the moment you have vector perpendicular to plane, and you have, you can take one of any these 3 points, you have equation of plane. And once you have equation of plane, you can directly apply the formula of finding image. Okay? So chalo, do you want me to solve it? I mean, do the calculation part. If you want, I'll do it. Otherwise, we can move ahead. I just summarized it. Yeah. Chakri ji, kal exam किस city में? Oh, okay. So you are talking among yourselves. Yeah. So yeah, we can move ahead. So you know how to take cross product. So let me summarize again so that everyone is comfortable. Yeah, let me just summarize again. So Sarita is saying yes, we can summarize again. So let me just summarize again. We have these 3 points lying on
plane. So we can have two vectors parallel to the plane, AB vector, AC vector. You take cross product of it, you basically get vector perpendicular to plane. Now the moment you have vector perpendicular to plane, you just need one point lying on the plane to just find the equation of plane. You have 3 points. You can take just one point, any of these 3 points, and you get equation of plane. And when you get equation of plane, let's say ax plus by plus cz equal to d, or plus d kar dete yaar, plus d equal to 0. Suppose this is equation of plane. Equation of plane. Yeah. Now let's say we want to find image of this. Let's say image is alpha comma beta comma gamma. Yeah. So the formula you should be using is alpha minus 2 by A is equal to beta minus 1 by B equal to gamma minus 6 by C equal to minus 2 times. You will put what? 2A plus B plus 6C plus D. 2A plus B plus 6C plus D. Yeah. X, Y, Z you just replace by 2, 1, 6. Yeah. Divide by A square plus B square plus C square. Yeah. So the moment you have equation of plane, the way just I explained, you can use this to find alpha, beta, gamma. खत्म हो गया. ठीक है? So take a quick note of it and then we move ahead. इसका आंसर ये आ जाता है. Yeah. So give tips for tomorrow's exam. Gamer Dude 13. Maybe we can talk at the end. Yeah. Please be with me till the end, and then maybe we can talk about that. Yeah. Hey. So let's move ahead. Let's move ahead. I hope you have taken note of it. So see, I am saying we can do these things at the end so that we don't waste time. Because everyone's time at this point of you may say period is important. Yeah. Everyone wants solutions. So let me just do that quickly. Oral question है खत्म हो गया. Basically this they are to be related by finding value of k. Differentiate करो इसे. अरे यार. Oh, what happened? Yeah. So differentiate करो इसे. So what you get? K x to the power k minus 1 plus k y to the power k minus 1 dy by dx. भाई साहब ये राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, कोई कोई वैल्यू है, डेरिवेटिव है 0. ठीक है. नाउ जस्ट रिलेट. तो essentially when you rearrange you will get dy by dx plus x by y to the power k minus 1. k तो कैंसिल हो जाएगा 0 के अगेंस्ट, इक्वल टू 0. सो बेसिकली जस्ट रीअरेंज. ओरल क्या है, रीअरेंज करो, एंड व्हेन यू कंपेयर यू विल सी k minus 1 इक्वल टू minus 1 by 3. माइंड इट. इधर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है. सो लेट मी जस्ट करेक्ट दिस पार्ट. दिस इज x बेसिकली. ये x है. ठीक है. टाइपिंग एरर. y by x दिया हुआ है. क्या? सो व्हेन यू कंपेयर मेक श्योर यू सी x by y है, इधर y by x है. तो k minus 1 मेरा minus 1 by 3 हो जाएगा. खत्म हो गया. तो k क्या हो गया 2 by 3. k 2 by 3 हो गया. ठीक है. टेक अ नोट ऑफ इट. या भास्कर रेड्डी, यू आर राइट. B is the answer. Alright, I hope you have taken note of it. Let's move ahead. नोट किया होगा, सिंपल है यार. नोट नहीं भी किया होगा तो भी लगा होगा कि ठीक है यार आगे बढ़ते हैं. यू विल फील के ओरल था ये. Alright, here you can do this question in different ways. Let me show you one way. ठीक है. एक तरीका मैं बताता हूं आपको. gx मेरा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, और g ऑफ fx मेरा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है. ठीक है. और मेरे से पूछा है f ऑफ 5 by 4. पहली बात तो ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए. क्या ऑब्जर्वेशन जाना चाहिए? कि यार मेरा g ऑफ fx जो मेरा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है और gx मेरा क्वाड्रेटिक है.
तो fx is supposed to be some linear polynomial. Think about it. fx is supposed to be some linear polynomial. उसे मैं अल्फा x प्लस बीटा लिखता हूँ, ठीक है? तो जस्ट सेटिस्फाई करो, g ऑफ fx मेरा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 है, तो g ऑफ fx क्या हो गया? g of fx will turn out to be what? Put fx instead of x in gx. So you get what? Alpha x plus beta whole square plus alpha x plus beta minus 1. So basically you get what? Alpha square x square plus 2 alpha beta plus alpha x plus beta square plus beta minus 1. Compare karo. Compare the coefficients. So alpha square is turning out to be 4. Alpha common load 2 beta plus 1 is turning out to be minus 10, or beta square plus beta minus 1 is turning out to be 5. तो minus 6 हो गया इक्वल टू 0. ठीक है, अभी ये देखो अल्फा मेरे को क्या मिल गया? अल्फा इज माय प्लस और माइनस 2. विल सी 2 लेना है, माइनस 2 लेना है, विल सी दैट. ठीक है, एंड हियर बीटा यू विल गेट एज व्हाट? ओरल है, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से देखो -3 और 2 आ जाएगा, या तो -3 है या 2 है. ठीक है, नाउ when you in this when you put alpha equal to 2, तो बीटा क्या मिलता है अपन को? अल्फा को 2 पुट किया तो बीटा यू विल गेट एज व्हाट? एक मिनट, या आई थिंक वी हैव डन इट राइट. तो -5 -6 -3 मिल रहा है. बीटा इज -3. कैन बीटा भी -3? यस, इट इज पॉसिबल. तो ये एक्सेप्ट हो गया. अगर अल्फा को -2 लिया, अल्फा को -2 लिया तो 5 4 2, बीटा इज कमिंग आउट टू बी 2. Can beta be 2? Hey, that seems to be possible too. Yeah, so this is also acceptable. So that means fx can be possibly 2 linear polynomial. या तो वो मेरा 2x minus 3 होगा, या फिर वो मेरा -2x plus 2 होगा. और मेरे से क्या पूछा है? f of 5/4. Maybe 2 possible answers may come. Let's see. So f of 5/4 अगर मेरे को पुट करना है, मतलब x equal to 5/4 पुट करो, so f of 5/4 as per this will be what? 5/2 minus 3 minus half. 5/4 put here, minus 5/2 plus 2 minus half. तो both are essentially giving you f of 5/4 the same value, minus half. तो केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, minus half. Yeah, so this is a way you can do it. Yeah, भाई g of fx turns out to be some quadratic and gx in itself is a quadratic. तो fx we can take as some linear polynomial. खत्म हो गया, या खत्म हो गया. कोई डाउट हो तो पूछो, मेरे ख्याल से क्लियर है. सो आपने लीनियर पॉलिनोमियल, यस अस्मित, वी हैव टेकन fx टू बी लीनियर पॉलिनोमियल. क्योंकि अगर आप कोई और पॉलिनोमियल लो, अगर आप कोई कांस्टेंट लेते हो तो gx कांस्टेंट आ जाएगा. अगर कोई क्वाड्रेटिक लेते हो तो क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आपको डिग्री 4 दे देगा. तो मेरे को डिग्री 2 ही मिल रहा है, तो दैट मींस आई कैन टेक fx टू बी सम लीनियर पॉलिनोमियल, और उससे आंसर आ जाता है. ठीक है, नाउ द अप्रोच दैट आई हैव शोन यू मे बी ऑफ हेल्प इन JEE एडवांस्ड, वेयर यू नो मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस आर देयर. अगर आपसे पूछा जाए कि लेट्स से fx इज सम पॉलिनोमियल, हाउ मेनी सच पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल सेटिस्फाइंग दिस? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 2. 2 पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल सेटिस्फाइंग ऑल दीज गिवन कंडीशंस. मतलब ये तो क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज. या प्लीज टेक अ क्विक स्निप ऑफ इट और स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन वी मूव अहेड. या मेरे ख्याल से देखा होगा, नोट किया होगा. लेट्स मूव अहेड. यार ये लेंथी क्वेश्चन है यार. या सो दिस इज अ बिट लेंथी क्वेश्चन. लेट मी टेल यू, नाउ इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी, जस्ट लेंथी. इधर ये कह रहा है कि z मेरा x प्लस आयोटा हुआ है. ठीक है भाई, रियल पार्ट ऑफ दिस इज आयोटा, फाइंड लोकस ऑफ z. तो बेसिकली जस्ट फाइंड द रियल पार्ट ऑफ इट एंड मतलब फाइंड द, ओके, रियल पार्ट इज आयोटा. हे देयर सीम्स टू बी सम एरर हियर, ये 1 हो जाएगा बेसिकली. हाँ, रियल पार्ट आयोटा कैसे हो सकता है भाई साहब?
सो दिस इज सपोज टू बी 1 बेसिकली, ये 1 हो जाएगा. रियल पार्ट इज 1. नाउ सम ऑफ यू मे बी लाफिंग कि रियल पार्ट आयोटा कैसे हो सकता है भाई साहब. या सो या इट इज आई थिंक टाइपिंग एरर. आयोटा मेरे ख्याल से 1 दिया हुआ होगा क्वेश्चन में. सो नाउ दिस रेजेस डाउट अबाउट द क्वेश्चन ऑल्सो, वैलिडिटी. आई मीन जो भी है, मतलब आई होप 1 ही होगा, लेकिन जो भी है, द पॉइंट इज अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी, विच I don't want to solve it completely because we don't want to waste unnecessary time. The point is you just put here, या completely solve कर लेता हूँ यार, मतलब कुछ लोग चाहेंगे कि complete solve किया जाए. Just put x plus iota y here. So x minus 1, we'll see whether we solve it completely or not. ठीक है, 2 times z plus iota. I hope ये सही लिखा है इन्होंने, 2z plus iota. देख लेते हैं, चलो जो भी है. 2x plus iota 2y plus 1. या अगर मेरे को रियल पार्ट चाहिए तो मैं डिनोमिनेटर को रियल बनाऊंगा, मल्टीप्लाई बाय कॉन्जुगेट. सो 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1 डिवाइड बाय 2x माइनस आयोटा 2y प्लस 1. तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा? रियल पार्ट विल बेसिकली बी 2x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होल स्क्वायर. या तो ये मेरा रियल पार्ट है. रियल पार्ट. या अभी ये रियल पार्ट है, दिस इज सपोज टू बी 1. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार. यू बेसिकली गेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1. सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट. तो बेसिकली व्हाट डज इट टर्न आउट टू बी? टर्न्स आउट टू बी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y. या 1 1 तो कैंसिल हो जा रहा है अपेरेंटली, इज इट नॉट? 1 कैसा आएगा इधर? y आएगा ना, ये 2y स्क्वायर प्लस y हो जाएगा ये. सो बेसिकली इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट? आई होप द कैलकुलेशन इज 2x हो गया. यू हैव 3y हियर. या सो दैट्स व्हाट इट इज, 3y प्लस 1 इक्वल टू 0. या so circle whose center is and all those things, right? So first of all you'll write with coefficient of x square and y square 1. So you get x square plus y square plus x plus 3 by 2y plus 1 equal to 0. So basically it is a circle with center minus half comma minus 3 by 4. ठीक है, तो माइनस हाफ माइनस 3 by 2 ये गड़बड़ है. सो बी और डी में से आंसर हो सकता है, डी नहीं होगा तो बी होगा. खत्म हो गया यार. और यू कैन जस्ट वेरीफाई कि रेडियस √5/2 आ रहा है. चेक कर लो. रेडियस स्क्वायर क्या हो गया? 1/4 प्लस 9/16 माइनस 1. सो बेसिकली इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 4 13. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? कैलकुलेशन एरर है क्या? जस्ट चेक इट आउट. 4 13 और 16. Maybe some calculation error we have made. Yeah, let me just confirm the answer. Yeah, I think answer is B. Just some calculation error, we will have to check it out. Maybe because of this 1 or something, I'm not sure. ये वैसे 1 ही होना चाहिए. Just check it out quickly. तो 1/4 9/16 माइनस c, सही तो किया अपन ने. हो, दिस ऑल्सो विल टर्न आउट टू बी हाफ. तो माइनस हाफ हो जाएगा. 2 से डिवाइड किया ना, ये माइनस हाफ हो जाएगा. ठीक है, तो देख लो यार आप. सो बेसिकली यू हैव 13 माइनस 8 5. सो ये क्या हो गया? 5/16 ये आ रहा है. या सो रेडियस टर्न्स आउट टू बी व्हाट? √5/4. अभी रेडियस √5/4 है तो डायमीटर क्या होगा? √5/2. खत्म हो गया, खत्म हो गया. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट इज. या सो श्रुति इज आस्किंग, मे बी समवन एल्स, मे नॉट बी मी, कि सर आपने कैसा एग्जाम लिखा था? मेरा 2010 में हुआ था एग्जाम. सो आई होप इट इज क्लियर. या
ये हे डिस्क थिक, यू आर राइट, कांस्टेंट टर्म हाफ होगा, अपन ने कैलकुलेशन जल्दबाजी में गड़बड़ की, या सो गुड, डिस्क थिक, गुड, या सो दैट मीन्स यू आर पेइंग अटेंशन, ठीक है. सो बस ये हो गया. हे आई थिंक जयंत साहा हैज ऑल्सो टोल्ड दैट एंड मे बी अदर्स ऑल्सो. मे बी आई एम नॉट एबल टू स्क्रॉल दिस. Am I? No, I'm not able to scroll. But then yes, I think Abhijit Kumar has also told the same thing. Yeah. So kudos to all of you who are paying attention. Yeah. So ये हो गया. Radius is turning out to be √5/4. R square is this. तो diameter मेरा √5/2 हो जाएगा. Take a note of it. Take a snip of it, and then we move ahead. तो yes, pro game. I told you right, lengthy है. तो थोड़ा सा lengthy है, लेकिन है easy. मैंने सोचा lengthy है तो यार skip मार देते हैं कैलकुलेशन पार्ट, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो. लेकिन मेरे ख्याल से मैंने कहा कि ठीक है यार, जितने मैं स्किप मारूंगा और मैं जस्टिफाई करूंगा कि स्किप मारते उतने में तो हो ही जाएगा, ठीक है. ऑल राइट, सो हे दैट्स हाउ इट इज. आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट. थैंक्स देवांश फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. सर मैंने 25 क्वेश्चन मैं ट्राई किया था, 22 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पर फिजिक्स नहीं हो पाया. हे हेमंत, फिजिक्स वगैरह सबको बैलेंस करके चलना चाहिए अपन को. थोड़ा आगे से आप देखना, स्पेशली एडवांस में देखना, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ भी होता है एडवांस में, जेईई एडवांस में. सो आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट. लेट्स मूव अहेड. 15. ये क्या बोल रहा है भाई साहब? डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ एलिप्स. डिड आई नॉट टेल यू दीज थिंग्स मैटर इन कोनिक? समवन हैड आस्क्ड कि सर कोनिक को कैसे बढ़िया कर दे. कोनिक में रिमेंबर नॉर्मल इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ slope and all those things, yeah. And also remember these things: distance between two foci, distance between two vertices, distance between center and vertex, and all those things, yeah. So distance between two foci 6 है, 2AE मेरा 6 है, ठीक है. Distance between directrices 2A/E मेरा 12 है. तो मेरे को लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए. तो बेसिकली when you multiply the two, you get basically 4A square equal to 12 6 क्या हो गया, 72 हो गया यार. तो बेसिकली A square बेसिकली क्या हो गया, 18. A square is 18.1. My answer of latest rectum will be what? 2B square by A. This is what I want. See, when you solve a question, be clear of the destination. कहाँ जाना है, especially in these type of question. तो अब मैं directly focus करूँगा. A तो आ गया मेरा, B square आ जाए. I'll just find B square. And B square is basically what? A square minus A square E square. तो A square मेरे को पता है 18. A square E square, आई मैं थिंक यार E निकालूं. E निकालने की जरूरत नहीं है, E मेरे को डायरेक्टली गिवन है. E मेरा 3 है, तो A square E square मेरा 9 हो जाएगा. तो बेसिकली ये 9 हो गया. तो बस जस्ट पुट इट हियर, यू गेट बेसिकली व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय B square डिवाइड बाय A. A क्या हो गया मेरा, 3√2. अब चेक कर लो आंसर कौन सा मैच कर रहा है. तो ये हो गया 3 और 2/√2, √2 हो गया, तो 3√2 आंसर है. B आंसर हो गया, ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. टेक अ नोट ऑफ इट. या श्रुति, टिप्स फॉर मैथ्स मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा. एंड व्हाट यू हैव सेड इज मैथ्स, या समथिंग लाइक दैट, ट्रिपल एस. या विल टॉक अबाउट दैट. या लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दिस थिंग. या ऑल राइट. सो आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट, टेकन अ स्निप ऑफ इट. लेट्स मूव अहेड, ठीक है. y ये है, dy/dx पे कमेंट करना है, अल्फा इक्वल टू 5π/6 पे. खत्म है यार. पहली बात तो इसे यू जस्ट सिंप्लीफाई इट. तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है, 2, अरे यार ओ भाई साहब, हाँ, 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा ओरली, साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा मेरा 1 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा बेसिकली साइन अल्फा कॉस अल्फा. 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा, एंड 1 बाय सेक स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया भाई साहब, ठीक है. सो बेसिकली दिस कैंसल्स आउट एंड यू गेट बेसिकली 2 कॉट अल्फा, या प्लस 1 by sin square alpha is basically cosec square alpha, and cosec square alpha is 1 plus cot square alpha. तो cot square alpha plus 1, इसका अंडर रूट लोगे आप, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, cot alpha plus 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट मॉड cot alpha plus 1. या सो
कॉट अल्फा प्लस 1, ठीक है, मॉड। अभी अल्फा मेरा 3π/4 से पाई है भाई, सिंपल सी बात है। ये अगर मैं π/2 लेता हूँ और ये पाई लेता हूँ तो कर्व कैसा होता है, कॉट का कर्व कुछ ऐसा होता है, और 3π/4 मेरा यहाँ आएगा, 3π/4 यहाँ आएगा, यहाँ पे वैल्यू है -1, सो 3π/4 टू पाई, तो मेरा जो कॉट अल्फा है इट इज लेस देन -1, तो -1 से कम है, तो कॉट अल्फा प्लस 1 0 से कम है, सो बेसिकली दिस विल ओपन विद माइनस साइन, माइनस कॉट अल्फा -1, खत्म हो गया। dy/dx क्या होगा, अगर y ये है तो सॉरी dy/d अल्फा, जस्ट अ मिनट, दिस इज सपोज टू बी dy/d अल्फा, ये थोड़ा करेक्शन होगा, इधर अल्फा हो जाएगा भाई साहब, अल्फा की बात चल रही है, अल्फा होगा, तो dy/d अल्फा कॉमेंट होगा, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो बेसिकली इट विल टर्न आउट टू बी cosec स्क्वायर अल्फा। अभी cosec स्क्वायर अल्फा एट 5π/6 क्या हो गया भाई साहब, cosec 5π/6 क्या होगा 2, तो स्क्वायर क्या हो गया 4, खत्म हो गया, ये आंसर है। टेक अ स्निप ऑफ इट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और नोट इट डाउन, यू मे ट्राई टू बी क्विक, सिंपल है। Yeah, I hope you have taken a snip of it. Let's move ahead. Be ready with the screenshot things. Yeah, that's how it is. Simple है. Let's move ahead. So these are the 3 points, 3 vertices of triangle ABC. P is a point such that area of triangle APC, BPC, CPA. Yeah. So they are equal. Areas are equal. And we have been asked to find length of PQ. Q is this, oral है. Basically you should realize कि जो मेरा P है, P is basically centroid. This is a property of centroid. P is basically centroid. तो P क्या हो जाएगा भाई साहब, 7 + 3/2, 17/2, 17/4, comma, sorry, not 17/4, 17/6. अरे यार, yeah, sum of x coordinates divided by 3, तो 7, 14, 17/2, तो 17/6 हो जाएगा, and 6 to 8, 8/3, खत्म हो गया। So PQ निकालना है, where this is this, Q is this, so PQ is basically under root, add करो, 24/6, 4 हो गया, 4 square and 3 square, 5 आ गया यार, गूगली बुश, आंसर आ गया अपना, सिंपल, अच्छा दिखता हुआ, ओरल था ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको करने ही चाहिए, ठीक है, देयर इज नो एक्सक्यूज, इफ यू हैव मिस्ड इट you have reduced your rank, reduced in the sense, I mean, you may say the number has increased of rank. Reduced means you will get greater value in your rank, as your rank, yeah, so that's how it is, yeah. all right, so let's move ahead, simple है, yeah, oral था, let's move ahead, I hope you have taken note of it, आगे बढ़ते हैं, ये how would you do it? P implies Q, intersection Q implies not P, so basically what you should understand is P implies Q क्या आ जाएगा, P implies Q you can write as what, you can write this as not P union Q, ठीक है, and Q implies not P, you can write as what, not Q union not P, ठीक है, I hope the question is right. So basically intersection of this, so not P union Q, intersection not Q union not P, yeah. So if you see carefully, not P आप common ले सकते हो, union Q intersection not Q, yeah, you can since I thought it is here, so since this is also union, this is also union, so you put this union here, ठीक है, and this intersection will come here, खत्म हो गया, तो Q intersection not Q, it's a fallacy, F, तो not P union F is basically not P only, तो खत्म हो गया यार, A आंसर है,
ऐसे कर सकते हो। ट्रुथ टेबल वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, बना के भी कर सकते हो, बिना बनाए भी ऐसे कर सकते हो खट से, ठीक है। अब ये देखो बताने में टाइम लगता है, करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, खट 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 खट। आपको किसी को बताना थोड़ी है, खुद ही तो रफ में सॉल्व करना है, तो मतलब थोड़ी बेइज्जती से भी लिख सकते हो, है कि नहीं है? इतना इज्जत से लिखने की जरूरत नहीं है। वेन डायग्राम, या वेन डायग्राम से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यू विल हैव टू थिंक इन दिस टर्म, राइट? P implies Q, ये होगा। वेन डायग्राम से भी सोच सकते हो। बेटर इज टू डू दिस वे, आई बिलीव दिस इज द बेस्ट वे। या ऑल राइट। सो आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट और स्निप ऑफ इट। इधर आ जाओ, मैं जैसे उस साइड जाता हूं ना, आप स्निप ले लिया करो। ऑल राइट, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर K फॉर विच 49 to the power K plus 1 is a factor of this. So first of all simple है, ये GP है, तो फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 126। 49 टू द पावर 0 से चालू हो रहा है, यू कैन थिंक दैट वे। 126 माइनस 1 डिवाइड बाय कॉमन रेशियो -1, 48। सो दिस यू कैन राइट एज व्हाट? 49 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नजर से देखो तो 49 टू द पावर 63 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 49 टू द पावर 63 माइनस 1 डिवाइड बाय 48, ठीक है। तो 49 टू द पावर K प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K, पॉजिटिव इंटीजर, फैक्टर, क्या होगा? दिखता है, आंसर इज बेसिकली 63, या 63 इज द आंसर। नाउ हियर यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड ऑल्सो मेक श्योर कि 48 शुड बी डिवाइडिंग दिस, 48 शुड बी डिवाइडिंग दिस। आर वी श्योर? यस। इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल, इससे आप किस तरीके से देख सकते हो? केवल देखना है, करना कुछ नहीं है, श्योर एंश्योर करना है। तो 48 प्लस 1 टू द पावर 63, इसको इस नजर से देखो, -1, दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 48, डिविजिबल बाय 48, ये 48 से डिविजिबल है। सो यू कैन क्लियरली से सिंस दिस इज डिविजिबल बाय 48, तो ये इंटीजर हो जाएगा, आई मीन नेचुरल नंबर हो जाएगा, एंड द फैक्टर विल बी दिस विच वी वांट, के मैक्सिमम कैन बी 63। खत्म हो गया। कोई डाउट हो तो पूछो, डी आंसर है। इन केस दैट इज डाउट प्लीज आस्क। मेरे ख्याल से क्लियर है। सो या प्रो गेम फिक्सर एंड अभिजीत एंड ऑल दे आर। सो या समवन इज आस्किंग कि कौन सा लेसन है ये? एक्चुअली बेसिकली वी आर डिस्कसिंग येस्टरडेज Shift-1 मैथ्स पेपर एक्चुअली। सो लेट्स मूव अहेड, आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट। खत्म हो गया, लेट्स मूव अहेड। ओके, S be set of points where this function is not differentiable, ठीक है। So we have to find sigma f of fx where x belongs to that set. तो first of all differentiable कहाँ नहीं होगा? Wherever this mod is becoming 0. तो पहली बात तो ये mod कहाँ 0 होगा? This mod becomes 0 at x equal to 3, yeah, and where is this mod becoming 0? This mod becomes 0 where mod of x minus 3 is equal to 2. So x क्या हो जाएगा मेरा? 5 और 1. So that means S is basically a set 1, 3, 5. खत्म हो गया। So what we want is we want f of f1 plus f of f3 plus f of f5. खत्म हो गया, ठीक है। Put x equal to 1. When you put x equal to 1, you basically get 0. So this is f of 0. f1 is 0. एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं मैं, बाकी इतना इज्जत से नहीं लिखना होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। खट से रफ में किया, आंसर लिखा। 3 इफ यू पुट अगेन, 1 मिनट 1, हाँ, तो 3 यू पुट, ये 0 आ गया, f2 आ गया, f2, एंड व्हेन यू पुट 5 अगेन ये 0 हो गया, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज f0? इफ यू पुट f0 इट इज बेसिकली 1, f2 1, f again 0, तो 1 आ गया, तो बेसिकली 3 इज द आंसर। टेक अ स्निप ऑफ इट, टेक अ डिड शुभम सर क्या टीच इन फिटजी प्रीवियसली? नो 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 नो। ऑल राइट, सो या दैट्स हाउ इट इज। आई होप यू हैव टेकन नोट ऑफ इट। सिंपल है, खट से हो गया। लेट्स मूव अहेड।
कितने क्वेश्चन खट से हो जाते हैं. नॉन जीरो, सो आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, ABC नॉन जीरो डिस्टिंक्ट है, तो हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन. नॉन जीरो सॉल्यूशन मीन्स दैट डिटर्मिनेंट इज गोइंग टू बी जीरो. तो दैट मीन्स व्हाट, 2 2 2 2A 3B 4C. ओरल है ये, तो ABC ये जीरो हो जाएगा. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम हियर. तो ये 1 1 हो जाएगा और 2 जो कॉमन आया वो कैंसिल हो जाएगा जीरो के अगेंस्ट. अनदर थिंग यू कैन डू इज नाउ यू मे जस्ट एक्सपैंड और यू मे मेक सम जीरोस. बेटर इज एक्सपैंड, इतना जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल डिटर्मिनेंट है. सो व्हेन यू मेक इट जीरो, I mean sorry, when you expand it, let's say you are expanding along, you can expand along say column 1. तो ये क्या हो गया, 3BC minus 4BC, ठीक है, minus you get what, 2AC minus 4AC, तो minus 2AC हो गया, ठीक है. 2AB minus 3AB, तो minus AB हो गया, equal to 0. So basically you get AB plus BC equal to 2AC. So when you divide by ABC, you basically get what? 1 by C plus 1 by A equal to 2 by B. So that means 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. खत्म हो गया. So these are the questions you can be very quick. So game over is saying अपना टाइम आएगा. Yes, I believe टाइम आएगा आपका, बिल्कुल खत्म हो गया ये. So but after question 19 there should be integer type. No, so we had actually Abhirup, we had certain integer type question coming in between. So they have been jumbled up. Yeah. So they have been jumbled up. All right. So hey, let's move ahead. I hope you have taken note. Simple question tha. 5 numbers are in AP whose sum is 25, product is 2520. One of the 5 numbers is this, greatest number amongst them. पहली बात तो 5 numbers in AP sum पूछा है, I mean sum दिया हुआ है. तो basically you will consider the terms to be A minus 2D, A minus 2D, A minus D, A plus D, A plus 2D. ठीक है. So when you have sum क्या हो गया भाई साहब, 5A, which is given to as 25. तो A मेरा क्या आ गया, A मेरा 5 आ गया. अभी थोड़ा ऑब्जर्वेशन लगाओ, सिमेट्रिकल चीजें हैं, ठीक है. वन ऑफ द टर्म्स इज माइनस हाफ, ठीक है. तो व्हाट आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज. एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये मेरा माइनस हाफ हो. सो फॉर दिस टू बी माइनस हाफ, डी मेरा क्या हो जाएगा, आई मीन फॉर दिस टू बी माइनस हाफ, डी शुड बी बेसिकली 11/2. या एंड फॉर दिस टू बी माइनस हाफ, सिमेट्रिकल है, या तो इन दो को कंसिडर कर लो या फिर इन दो को कंसिडर कर लो. फॉर दिस टू बी माइनस हाफ, डी शुड बी व्हाट, एंड वी वांट ग्रेटेस्ट, तो सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर दिस टू बी माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा, इट शुड 2D शुड बी 11/2, तो ये 11/4 हो गया. हियर एज पर दिस D टर्न्स आउट टू बी 11/4. चेक कर लो. अगर 11/4 लेते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा क्या वो 2520 आ रहा है. सो व्हेन यू हैव 11/4, सो बेसिकली प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट इज बेसिकली multiplication of all of these. Yeah, so A multiply by A square minus 4D square multiply by A square minus D square, A plus D into A minus D. ये basically मेरा क्या आना चाहिए, 2520. So basically A square minus 4D square multiply by, अभी A को 5 लिख सकते हो, 25 लिख सकते हो. So I mean A is 5, so 25 minus 4D square multiply by 25 minus D square equal to 504. तो चेक कर लो, D को 11/2 डालो तो 121/4, 121. So you basically get what, 96 minus 96 minus minus plus हो जाएगा. तो 96 and 11/4, so 96/4 सॉल्व करके देखो, this matches, 11/2 matches. Yeah, so basically you get what, 121/4, 125 minus 120, just a minute, 100 minus 121/4, so minus 21/4, 4 और 96 कैंसिल हो गया.
and you get basically 14, no, 24. Yeah, so 24 multiplied by 21. 24 multiplied by 21 is 504. So this matches. D मेरा या फिर आप D यहाँ से निकाल सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. You solve this, get D. Or just have some presence of mind, use this thing and find कि यार या तो D मेरा 11/2 होगा या -11/2, doesn't matter much. या फिर 11/4 या -11/4. Yeah. So खत्म हो गया ये. So that means D equal to 11/2 gives you the right thing. Yeah. 11/4 डालोगे तो मैच नहीं करता प्रोडक्ट, तो दैट मीन्स D शुड बी 11/2. अरे भाई, why is it not getting selected? Okay, so greatest will be what? Greatest is basically A plus 2D. 2D. So basically 11 plus 5, 16 हो गया. 16 is the answer. खत्म हो गया. B आंसर है. B answer. I am getting 234. What will be my rank? FFSS is saying, hey, it may be some decent rank. I should say 234 is a decent marks. Yeah, so good to know that you are getting 234. But commenting on rank may not be very feasible for me. It depends. Yeah. All right, hey, let's move ahead. I hope you have taken a snip of it if you wanted. Yeah. Let's move ahead. We move ahead. Hey. Just a minute. There seems to be some issue here. Let's do this question first. Just give me a moment. Just give me a moment. There seems to be some error here. Yeah. There's some error here. I mean, now I hope it is fine. I just corrected it. Yeah, I got it. Yeah. Here we go. Yeah, so here we come. So this is the question that we had. Okay. So I hope everyone is fine there. So this is a very good question in my opinion. Yeah. F of a plus b plus 1 minus x is equal to f of x. Yeah, where a, b are some fixed positive real numbers, and we have been asked this is equal to which of these four options. 1 by a plus b integral a to b x fx plus f of x plus 1 dx is equal to what? Yeah. So here please pay attention. First of all, using property, yeah, so say this is I, say this is I. So using you may say property 4 or whatever property name you may say, basically this is equal to when you put instead of x a plus b minus x. Yeah, so I is also equal to 1 by a plus b integral a to b, instead of x I'll put a plus b minus x. So I get what? A plus b minus x multiplied by f of a plus b minus x, f of a plus b minus x plus f of a plus b minus x plus 1. So you may say what? F of a plus b plus 1 minus x dx. Yeah, so that's what this turns out to be. Now f of a plus b plus 1 minus x is basically fx only. Yeah,
multiply by integral a to b a plus b minus x. So this is fx only. We know this. This is fx only. Because we have been given f of a plus b plus 1 minus x is fx only. Now what about f of a plus b minus x? What about f of a plus b minus x? Basically, when you put x to be x plus 1, when you put x to be x plus 1, the left hand side will become what? F of a plus b minus x, and right hand side will be f of x plus 1. Yeah, so with this you can understand this is plus. Yeah, this is plus. So f of a plus b minus x turns out to be f of x plus 1. Yeah. Yeah. So now what does it become? This is also I. So when you add these two i's, you basically get 2i equal to 1 by a plus b will come common. Integral a to b f of x plus 1 will come common. When you take common, you will add a plus b minus x plus x. So basically you get a plus b dx, and this cancels out. This cancels out. Yeah. So basically you get 2i equal to integral a to b fx plus f of x plus 1 dx. Yeah. Now if you consider integral f of x plus 1 dx a to b, this is same as integral, instead of x you will put a plus b minus x. Yeah, you will put a plus b minus x. So you get f of a plus b plus 1 minus x, because plus 1 is also there, dx. Yeah. So basically it becomes what? Integral a to b. Now f of a plus b plus 1 minus x is basically fx only. It is fx only. Maths was a little tough. No, only this question is a bit decent question. Rest questions were, as you have seen, they were not so difficult. Some of them were lengthy a bit. Yeah. So f of a plus b plus 1 minus x is basically fx only. So basically it is integral a to b fx dx. Fx dx. Yeah. So now 2i equal to integral a to b fx plus 1 dx is same as integral a to b fx dx. So that means I is equal to 2i is equal to 2 times integral a to b fx dx. Why? Because integral a to b f of x plus 1 dx turns out to be integral a to b fx dx. So that means 2i is equal to integral a to b fx dx twice of it. So I is equal to integral a to b fx dx. And that's the major thing. Yeah. And that should turn out to be the answer. Yeah. This is the answer. Now, but no option is given like that. No option is given like that. So basically what, there seems to be some error here. This is supposed to be, ulta seedha kar diya. Say this is b minus 1 and d is the answer. Yeah. Because when you shift, when you shift x, or when you put x as x plus 1. So when you put x as x plus 1, so the limits will reduce by 1. When you increase 1 here, the limits will reduce by 1. So it becomes a minus 1 to b minus 1. And that's what it becomes. Yeah. So D is the correct answer. So it is a good question in my opinion. Take a good note of it. This is a very good question. Yeah. Especially from JEE Main point of view, this is a good question. Take a quick screenshot of it, and in case there is doubt, you may ask. Yeah. All right. So hey, I hope you have taken a snip of it or a screenshot of it. Let's move ahead. Yeah, this is how it is. All right, good. Hey, thanks. Ho gaya sir, Devansh is saying. Yeah. So now coming to this question, an unbiased coin is tossed 5 times. Suppose a variable x is assigned the value k when k consecutive heads are obtained for k equal to 3, 4, 5. Otherwise, the value is taken as -1. So expected value kya hoga? Expected value is similar to mean. Yeah. Nonetheless, what is the expected value of x? So first of all,
what all values x can take? X can either take 3 or 4 or 5, in which case the value of x is basically 3, 4, 5, yeah, and otherwise the value is -1, yeah. So rather than doing this way, let's say what? Say x is taking 3, 4 or 5. These are the values x is taking. The value of x is 3 when 3 consecutive heads come. The value of x is 4 when 4 consecutive head comes. Value of x is 5 when 5 consecutive head come. And that's what the maximum number of consecutive heads. Otherwise it is -1. So let's talk about directly probability. So we can make this solution short and be quick. Yeah. So first of all, 5 consecutive heads. कैसा होगा? A की possibility है. For 5 consecutive head, for 5 consecutive head. Yeah. So the probability is 1. Favorable case is just 1. Total number of cases is 2 to the power 5, because each toss can result in 2 outcomes, head or tail. 2 to the power 5. 5 times we are tossing. So 2 to the power 5 is 32. Now 4 consecutive heads possible only in 2 ways. Head, tail, or tail, head. Yeah, so 2 by 32 it becomes. Yeah. Now 3 consecutive heads, or rather let's say the maximum length of string of head is 3. It is supposed to be 3. So let's say first 3 are head. Then it can either be tail or it can either be tail head. Yeah. Let's say the middle 3 are head. So there is one possibility only. This has to be tail, this has to be tail. Because otherwise if any of these turns out to be head, the maximum length of string of heads will turn out to be more than 3. ठीक है? और अगर लास्ट 3 अगर मेरे हेड है, अगर लास्ट 3 हेड है, तो शुरुआत के 2 टेल हो सकते हैं, या फिर मेरा हेड और टेल हो सकता है, हेड टेल. या तो ये 5 फेवरेबल केसेस है, 5 फेवरेबल केसेस. या सो इट बिकम्स 5 by 32. तो बचा हुआ क्या हो गया? I mean the sum of probability has to be 1. तो ये 6, 8 by 32, तो ये 24 by 32 हो गया. या तो what is expectation? The expectation of x is basically sigma xi pxi, is it not? So basically it turns out to be 3 multiplied by 5 by 32 plus 4 multiplied by 2 by 32 plus 5 multiplied by 1 by 32 plus minus 1 multiplied by 24 by 32, basically minus 24 by 32. So basically it turns out to be what? 15 plus 8, 23, and just a minute, 15 plus 8, so 23 plus 5, 28 minus 24, so 4 by 32. So basically it turns out to be 1 by 8. So 1 by 8 is the answer. A is the answer. Yeah. सर जी आज का पेपर फोड़ दिया हैं रोहन. आई एम नॉट श्योर व्हाट यू आर सेइंग, बट आई बिलीव व्हाट यू आर सेइंग इज यू हैव डन वेरी गुड इन टुडेज पेपर. आई एम हैप्पी अबाउट यू. या अबाउट दिस थिंग रोहन. थैंक्स फॉर शेयरिंग. सो या आई होप यू हैव टेकन a snip of it. Let's move ahead. Why they have given this solution? Nonetheless, let's move ahead. So A vector is alpha I cap plus 2j cap plus beta k cap. Yeah, that's what A vector is. This is the last question, and then there will be an announcement. Lies in plane of B vector and C vector. So B vector is this, C vector is this.
and off नहीं होगा मेरे ख्याल से, if होगा. There seems to be some issue here. It should be basically if A vector is a bisector of angle between B vector and C vector, then which of this is correct? Yeah. So first of all, what can A vector possibly be? A vector can possibly be, say, lambda times B cap plus C cap. Yeah. So A vector can possibly be lambda times B cap plus C cap, or you may say mu times B cap minus C cap. Yeah. Or you may say alpha beta, whatever. Yeah. So A vector equal to lambda times B cap plus C cap. So basically I cap plus J cap by root 2 plus I cap minus J cap plus 4K cap divided by 3 root 2. Yeah, 18. Yeah. So this is what it can be. So basically it turns out to be what? When you take LCM, 4 by root 2 I cap and 2 by root 2 J cap and 7 by root 2. Sorry, 3 आएगा ना, 3 root 2 just 3. So 4 by 3 root 2 I cap and 2 by 3 root 2 J cap and 7 by 3 root 2 K cap. Yeah. So now with this lambda will turn out to be what? Because A vector is having 2 J cap. So that means what? For it to be 2, lambda should be equal to 3 root 2. Comparing the J cap component. Comparing J cap component. Yeah. So A vector is turning out to be what? 4 I cap plus 2 J cap plus 7 K cap. A bit of lengthy, but then yes, this is how it turns out to be. Now, so A vector turns out to be 4 I cap plus 2 J cap plus 7 K cap. Does any of this match? No. So let's try the other possibility. So mu times I cap plus J cap by root 2 minus I cap minus J cap plus 4K cap divided by 3 root 2. Yeah. So basically it turns out to be what? Mu by 3 root 2 अगर आप common ले लेते हो तो you basically get minus 2 I cap plus 4 J cap, so minus K cap. Yeah. So now again 2 J cap is what we have in A vector. So that means mu will turn out to be, for it to be 2 J cap, it should be basically 3 by root 2. Is it not? 3 by root 2. So that means A vector turns out to be, so mu should turn out to be 3 by root 2. So A vector will turn out to be minus I cap plus 2 J cap and minus half K cap. Yeah, that's what it should turn out to be. Yeah. Or have we made some error here? Because again nothing seems to match, or maybe the options may not be correct. I'm not sure. Here 3, so this is basically 2. Yeah, you have 3, 4 and 3 minus 4 minus 1. That seems to be correct. So 3 by root 2 you get half and 2. So hey, there seems to be some issue here. I'm not sure what. Have we done some calculation error? You know, last question, you know, a bit of time we have passed, so maybe some error might have crept in. Just check it out. 3, yeah,
3 by root 2 we get half. Half k cap. Doesn't seem to be matching any of this. So maybe some calculation error we have done. Basically this is the way we do it. Yeah, this is the way we do it. Yeah, take a snip of it. Take a snip of it, and then you know, there is some announcement. Alright, so there seems to be some error here. ये -4 हो जाएगा. So have we made a similar error here? Either I have made a similar error, I believe. So this should turn out to be 4 only. Yeah. So this should turn out to be 4. So again, nothing matches, it seems. And here things will match, and you get basically -2. So now you can check it out. Basically A answer matches. A answer matches. Yeah. थक गए हैं. Yeah. So थक गए हैं अपन. So that's all. I hope कोई doubt हो तो पूछ सकते हैं. बाकी we can. Yeah. So you are right, Kumar. Thanks for pointing it out, and Yash and others. So this is how it is. So yeah, last question, and we had some calculation error. You know, it is hectic in the way we have gone through each and every question. Yeah. Okay, Isaac, yes, I welcome you. Isaac James, I remember you. Yeah. Hey, so let's move ahead. What they have done. Oh, so there seems to be, this is what we have to do. Yeah, so there seems to be some announcement regarding JEE crash course. So live classes will be taken for all the 3 topics. There will be doubt solving, there will be comprehensive tests, assignments with analysis. Yeah, tricks, tips and clicks will be shared with you, and previous year paper analysis will be done for you. So this is about the crash course. Devansh, I believe you were waiting for this. Yeah, and yeah, so this is you can use this link and this code. Oops. This is what it is. So this code you should be using to get this discount. Yeah. So once you have after this JEE Main, for next JEE Main this course is meant to be. Yeah, of course. So you can prepare for your April JEE Main exam with this crash course. Yeah. So please take a note of it, this link and this code. And please go see, there is no charges for visiting the link. So please do visit this link, vdnt.in/JEECCE. Yeah, and use this code to get the discount. Otherwise you may not get the discount. Yeah. So that's all from my side. I hope so droppers के लिए भी है. Yeah, droppers के लिए भी है. It is for all 12th and droppers all. Yeah, Devansh. Yeah, droppers के लिए भी है. So take a note of it. I'm just getting aside so that you can take a note of it. Sir, any probability for tomorrow paper? I'm not sure what you're asking, Kush. So that's it. For 11th, hey, this is for, crash course for, JEE Main April exam. Yeah. So this is not for 11th as such. This is for 12th and 13th. Please take a good note of it. You may share this link with your friends and family members who may be interested, but don't miss sharing this code. Yeah, because with this you'll get this discount. Yeah. So that's all. Hey, not for 8th, not for 9th, not for 10th, not for 11th. It is just for 12th and 13th. Yeah. So
Of course, you can visit our website and explore the options that may be available for you. Yeah, the 8 guys, 9th, 10th, 11th, but this is for 12th and 13th to target the upcoming JEE Main exam in April. Those who want to back themselves up, prepare well, and do nice in the April exam. Yeah, so this is for them. Yeah, so I hope you have taken note of it. That's all for today. Thanks a lot. Goodbye. Take care. Have a nice time ahead. Bye.